Good afternoon. I myself is Nanda and your today's resource person. And today I start this meeting, Cbse Inhouse training meeting. Topic is experimental learning in practice. Today's topic is experimental learning in practice. And I myself, Krishna, your resource person of today's in-house meeting, and we all are colleagues here. We have to train ourselves here. You all know the things. And very first, I would like to explain today's topic: experimental learning. Today's topic is experimental learning. You all teach generally in the class. And teach the students just a theory. A theory is just an assumption, not the reality, not the theory may be right, may be wrong. Theory is always not correct. Theory is just assumption. Means that visualization that you are saying, student, that you just assume it may be happen. But if you give him experimental evidence by doing some practices, just explained before. I just giving you an example. You are teaching a student how to drive a car. Just you are teaching a student how to drive a car. But you are teaching him from a long time period. 1 class, 2 class, 3 class, 4 class, how to learn a car. But you never give him a car to drive. Just say how he will drive a car. He can never drive a car without driving in reality. You just giving him an assumption that you have to very first sit inside the car, and using clutch, gear, accelerators. Just as visualization to students, you are giving a visualization, giving a theoretical aspects to your students that you have to do like this. But you are not giving anywhere, anytime a car to drive that car, how to drive it. Yes, you have to sit beside him inside the car. Whenever you are teaching him how to drive, that is the experimental way of teaching. We all have to focus on experimental way of teaching. This is the best method. One thing also, this topic is experimental learning in practice. Means that what we are doing, what students are doing these days, or what we are doing, we should learn from our works, learn from our daily life activities, what we do every day, what we face challenges day by day, every day. We face every types of challenges like time management also. One thing also, we should never say an student that you are very notorious, you are vulgar. Never avoid the student by saying that you are very bad, that you are inside the class always shouting. These are our dear students. Parents send their wards to the school only for what? Parents send their wards to the school for learning, for teaching. Their parents also believe on us that we have to make sure their words, we have to teach their words in a good manner. Yes. Now today, this experimental learning in practice, I just elaborated and just explained that what is the meaning of these words, experimental learning. We also go to class generally one day I was teaching a student that lead nitrate, when we hit a lead nitrate, it forms a red brown color gas. But he has never seen, any students have never seen that which types of gas is and how it looks like. One day I bring them to lab. I heated the lead nitrate. They watched the lead nitrate solution. They watched the nitrogen dioxide gas, red brown colored gas. Now they feel that. Experimental learning means that feeling, that you feel, that you realize, and in reality. And theoretical learning is just an assumption. Just I am saying that copper sulfate may be a blue color. You just imagine that copper is a blue color. Yes, simply you can say copper is a blue color. But in reality, if you watch a copper, if you touch a copper sulfate, you can feel that there, the exact color of copper sulfate. That is the experimental learning. We should also
also give the students a chance from surroundings to learn what they are facing day by day. You also in different subjects. We all, this is in-house meeting training. Once I am repeating the same. This is in-house meeting training. We all are colleagues. We all are teachers here. We have to train ourselves. We have to put forward our thoughts about what should done over the given topics. And today's topic is experimental learning in practice. This experimental learning, we have to transform it to our students, which are now learning in our school. Today I faced that in chemistry I gave four questions in class 9B, and no one students were able that time to solve every questions. They don't know how to write in lines. Why they are in class 9? One thing is also very important. If in your subject, your student is not carrying good marks, it means that you are totally responsible for this. You can't never blame on students that the student is very weak. Why you are teaching? If your student is weak in that subject, you are teaching Hindi, you are teaching English, you are teaching math, I am teaching chemistry, you are teaching physics, I am teaching physics, I am teaching chemistry. If my student is not carrying good marks in chemistry and physics, we should never say the student that you are weak. That time we are weak, not the student is weak. Many students have got 0 marks in chemistry. What would you like to say about it? If a student is carrying 0 marks in chemistry, I should focus in class. After that, you are asking before or after? After. What's my answer for this 0 marks? Yeah, I ask to students, I go to the students, I talk to him, what happened? Why you are not carrying marks? Why you have not solved the question examinations? I will check out his fair copy, his class 1 copy, what questions I have taught in class. Numericals I have taught in class. I will check out his copy, CW copy, HW copy, sir. And thereafter I will recognize that these types of bad activities, these types of faults is inside him, and I will get rid of and figure out from that student. Do you believe that it's your fault that the students have got 0 marks in chemistry? Yes, this is my fault. I am responsible for this. Yes, sir. I agree for this. I am totally responsible for this. But the student is not. Yes. The student is not. If you are making a pot, there is no mistake of pot. This is mistake of your hand. As you might, the pot will say, according to you, according to makers. We are the teachers. We are the teachers. We make everything. We made our students a doctor, engineers. We made many things to students. Okay. Now today I again come to my topic. And we all are the parts. Don't sit like that. You are just watching. We are just practical things that what you are doing. These are also practical. If I am teaching a student, he is not learning. This is also experimental way to teach the students how they learn from our teachers. You are teaching inside the class. Your student is not learning anything. You are totally responsible for this. The student is not. The student is not for this. You are totally responsible for training. Any types of activities which are going on, we have to get rid of from that activities. This is also a practical way that if a teacher inside the class teaching, this is a practical way. Your recordings are start. This is the practical way. This is the practical way that a teacher now teaching inside the class. If the teacher is standing inside the class, if teacher is teaching inside the class, whatever teacher is doing inside the class, no matter. But without asking him, in front of the student, you cannot enter the class. This is also the experimental way of learning. This have to we should not you only. We should learn from this is the activities that we have not entered inside the class without asking the teacher. The teacher is inside the class. The total power of the class
is in hand of the teacher. If you are just entering inside the class, it means that you are just you are not giving the value of the student teacher. You are demoralizing that teacher inside the class in front of the students. This is also bad manner. I am saying this only because this is a part of learning. This is a part of training. Don't be otherwise. But to be practical for this. Second thing, I come to my topic again. We have to focus on students. We have to transform the basic thing to a student is that we should always teach students like what they are doing, what they are watching around them. They have to learn from their surroundings, from their activities, what they perform every day. If you are giving just them theoretical aspects, these are I said this before. These are just virtual assumption. Virtually, you are saying to students that just imagine that you can drive a car. Just imagine you can drive a car. Just imagine you are driving, you can drive a car. But you are not giving him to drive a car. How he can drive a car? No. We have to teach the students according to experimental experiments. We have to we have to perform experiment very first before the student and give him a chance. Or anybody have to say anyone have to say anything about this? In bike also same thing. In bike also, Sorry? in bike also it will teach theory to the students to how to drive bike. But he will not do practical and how he can learn how to drive bike. I am agree with this, but we have to give first theoretical aspects. We have to give first theoretical aspects. Thereafter we have to give him the experimental evidence. But experimental evidences, and then how in experimental evidences students realize the real things. This relies on the approach of learning in different learning. Yes. Different learning approaches. Different learning approaches. There are different ways, approaches of learning Yes. in different levels. So on that, step by step, that will, with the course of time, it will be carried out. That time in experimental learning, they will That is realize it. step by step, the step approach of learning. Yes, they will realize it. If I just teach inside the class, this is a chemical reaction. When magnesium ion bonds to form magnesium oxide, if I say them to students, if I teach their students magnesium ion bonds to form magnesium oxide, they will just realize it. I give you a visualization that a magnesium ion like magnesium ion like a D1 in Hindi, this is a fleeta, it is a grey color substance, it is a soft, not so soft, but it is a soft. It bonds to produce a dazzling light. A student will just visualize, a student will imagine it, but the student will not feel it, and without performing the experiment, without burning the magnesium ion inside the lab. If I am showing by burning magnesium ion inside the lab, you will realize that how dazzling light come out when magnesium ion bonds. Magnesium ion bonds to produce a white color substance, that is the magnesium oxide. The students will realize it, the student will feel it, how magnesium ion bonds. And something we generally in our daily life learn from the activities or work which we perform every day. That is the experimental learning. Nowadays we have to, today's meeting topic is experimental learning in practice. Means that whatever experiments we perform, the students should be learning from their practices, from their experiments. Okay? Now, or somebody discuss over this. This is it. Oh, we have experiments. It's too long. Multiple sensor approach in practical activities. Multiple sensor approach. Multiple. Sensor approach. Yes. This is a practical thing. Yes. And in general, not only limited to chemistry, but in general, All subjects. In all subjects. Also, in general, it should be Hindi as well as Sanskrit. in general. In general. Also, it should be in Hindi. It should be
be in some Multi-sensor approach. Yes. Also, it should be in maths also. You are teaching just inside the math class. Your students is not getting a good marks. Your students is not solving the questions. I repeated. Again I repeat. You are totally responsible for this. And we have to go to students. We should go to students and ask them what is the problem behind this. Why you are not solving the questions one by one. And we check it how they are solving the questions inside the class, and we teach them how to solve the questions. This is also a part of practical learning. This is also a part of learning in practice. This is also a part of experimental learning in practice. And or suppose that our experiments are too long, then we have to cut the experiments into several parts and to do it day by day. yes, Right. So first theory, then practical, then theory, then practical. Day by day, then practice. sometimes we learn directly through experiments. Sometimes we learn directly from experiments. Observing and writing the observation. Yes, and in chemistry, maximum things are experimental data. Maximum topics are from experimental data, which happened inside the lab. That is the experimental learning. What do you think about experimental learning practice? You can also speak in Hindi. I'm with you. This is in-house meeting training. We all are colleagues here. We have to train ourselves. Why? Yes, sir. Yes, sir. Wanted to hear from you that multiple sensor approach means involvement of our sense organs. We learn through sense organs. Yes. By visualizing, Yes. by smelling, By through smelling. touching, Yes. through hearing. So these are the multiple sensor approach having gained the in practice. Yes. Without any sensor approach, how we can get the knowledge of reality in practice? So without any sense organs. So sense organ involvement is very necessary in multiple sensor approach. Yes. Suppose you are going to one medicinal river and students see a dazzling light, very sparkling. They get attracted. And what happens? This is reality, that is sensual approach. And cracking sound while dislocating the electrolysis process when hydrogen gas involved, and when you bring a flame, then it pop sound. This is Pop sound, like This is pop. This is pop the pop sound. sound. So this is the hearing approach. Yes. By touching, through touch we can find out the gesture, whether the object is soft or hard. So this is the touch. And whatever. So this is the sensual, multiple sensual approaches. Yes. Through touch. Whether the object is acid or base, through touch. Sour taste gives us the acidic, and bitter taste gives us the base. So this is the multiple sensual approach. In practice, we cannot teach whether the subject Yes, is acid or that base. is the correct point. So this is the sensual approach. What I wanted to say, what I want to hear from you, multiple sensual approach in Yes, practice. multiple sensual approach. This is also very important thing. Without smelling, without touching, without observing the Because we things. acquire knowledge with our sense organs. Yes, observation means that the things which are happening and you are just watching. That is what observations. Five sense organs gives us the knowledge of the reality, facts, sense organs. Yes. In chemistry lab and also In physics lab. every realm of discipline, we approach our sense organs. Without sense organ, how we can get the knowledge of the fact? Yes, without a sense of hearing, cannot. सर प्रैक्टिकल टीचिंग से पहले प्रैक्टिकल टीचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम लाइफ में आए हैं This is subject. तो कुछ तत्व ऐसे हैं सर जिस तत्व के जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है तो उसको अगर हम पहले से जानते रहेंगे प्रैक्टिकल करके जान लेंगे तो उस हानिकारक उसके प्रभाव से बचने के लिए इससे पहले हम लोग प्रैक्टिकल टीचिंग में बहुत जरूरी है उसके बाद प्रैक्टिकल टीचिंग को उससे कंबाइन करके तो हम कराया जाए उसको जानेंगे But nowadays CBSE now also focusing over the practical learning.
सर you can see, excuse me, you can see questions of class 10 sample set question paper. 95% questions are directly from practical experiments. 95% question. Also in physics, chemistry, and biology. 95% question in chemistry is from experiments. I agree with you that One thing is that we do practical activities in laboratory to verify the facts. Yes. We first observe the phenomena. Yes. Suppose that lightning thunderstorm takes place inside the clouds. Yes, sir. So in order to verify what factors that creates the lightning, you need to know the reality, then you approach. Yes. So observation and experiment is secondary, first observation. Yes, sir. First observe the reality, then you verify the lab. yes. So this is a subjective. Yes. Sometimes practice give you the theory, sometimes theory never you the practice. Yes. This is subjective. You cannot make it objective. It is variation. Subjective. Varies. Yes. The theory is always not a reality. Theory is always not a reality. First observe, phenomena is observed. Yes, phenomena is also. Newton observed the Yes, following sir. things, then he generalized and gave the universal law of gravitation. That is a phenomena. So That is a phenomena. phenomena. Then we are going to laboratory to verify the facts. Verify the facts. So laboratory is for the verification purpose. Yes. First observation is being observed and verified. First observation. Primary is observation. Yes, sir. Then you go to lab to verify the fact. Yes. क्योंकि And सर that observation is directly put in theory. That is the theory. Theory may be, sir, theory may be right, may be wrong. All time theory is not correct. सर मेरा सेंस Ever dynamic. Yes. There is no final answer. Conclusion. No final conclusion in science. सर क्योंकि बच्चे के लिए है ना कोई भी तत्व जो होते हैं जैसे केमिस्ट्री लैब में है वो पहली बार देखते हैं ना उनको जब तक उनके बारे में कुछ समझ सर, अगर मैं बच्चे को मैथ पढ़ा रहा हूँ, बच्चा 1 में लगता है, उसको मैं सब्ट्रैक्शन, डिवाइड ये सब देता हूँ, मैं उसे 100 रुपया दिया, बोला इसको 30 रुपये का सामान खरीदना है और पैसा लेकर गया, और वो बच्चा 100 रुपये लेकर गया, 30 रुपये का पैसा सामान लेकर गया, उसे ये काउंट करने में आया कि कितना वापस होगा, क्योंकि उसका पढ़ना बेकार है। यस सर That is the practical learning. यस बच्चे के पास ये होना चाहिए, अगर वो सीख रहा है, student is now learning, that should be, he should know how much amount it will come back, he will come back. तो कितना पैसा वो वापस लाएगा ये पता होना चाहिए। बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, उसको मैथ बनाने नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं बच्चे कमजोर है, फिर आपके पास पढ़ने क्यों आ रहा है? यस या तो आप कमजोर हैं तो बच्चा कमजोर है। सर बच्चा तो कमजोर होता ही है बच्चा तो कमजोर होता ही है You cannot say you are weak. I take totally responsible for this. If my student is not solving my question, I am responsible. यस There are two types of classes, exclusive and inclusive classes. Inclusive classes and exclusive. So those who are physically challenged and those who have mental disabilities and they are unable to perceive the reality. This is the matter of individual differences. Every people has individual differences, their own intellectual level, their thinking, their memory, and learning and memories. Yes. Memory plays a vital role in learning. Without having the memory, you cannot learn. Being a teacher, So our duty is what? Teach the students. Our duty is what? But we have to know the facts why he is unable. Disabled. So individual differences are there. यस You cannot ignore individual differences. So exclusive and This is also important part. Individual differences. so the students who are not getting good marks or are unable to learn, so there is special classes Yes. which is called inclusive classes. यस Inclusive classes. Inclusive classes. So there are different classes, there are extra classes, remedial classes. Yes, sir, after this General classes is not. Yes. So those students are challenging in learning, we provide a special class. We cannot gather together in the general class. So you might have studied on being chapter. Exclusive and inclusive in learning. You have to study. ओके सर In school, I have also observed that there are many students who are not able to learn, who are not able to sit in class 9, class 8, but they are still now learning in class 9. Students take admission Directly. by hook and crook. Yes. By hook and crook they get By hook admission. and crook, And yes. we suffer. Yes. And he is suffer in class, and also he disturb all the class. I have seen Yeah, sir. here few students in class who ask a very remarkable questions. Yes. Otherwise they are passive learner. In previous meeting I have told you that teaching is a bidirectional process.
It's not a unidirectional process, it's a stream-like process. So bidirectional process will be held. There are many students who are not able to sit in class 9, class 8. Just said that they take admission by hook and crook process. Hook and crook process. Hook and crook. किसी भी तरह से. और वो क्लास 8 के लिए भी नहीं होते, 9 के लिए भी नहीं होते, लेकिन उनका एडमिशन 8, 9 में भी करते हैं, और अपनी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं. My students have, today's I have met with one girl. She was unable to represent 5/7 on a number line. 5/7 on a number line. This is the rational number. Yes. So how to represent rational number in a standard line? Today I taught her. This way you can put 5 को 7 भाग में divide करो. अब प्रत्येक भाग एक का 7 होगा. फिर बचना स्टेप तो 2 भाग का 7 होगा. So this is the practical approach. A project preparation उसके बाद वाला 7 सिखा सकते हैं. Practical approach. वे मतलब हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा एक रोटी और है. होगा. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जीरो. A piece of chapati is Simple. simple. If you divide and divide, the piece part is a fraction of 4. So this is the practical approach. While doing anything in the this is a very good topic. This topic should be shared and taught in our teaching community. Yes. This is a very good topic you have got. This is very good topic. In a starting line for very good topic. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. Very good. Yes. इस पर बहुत शौक है पढ़ा जा सकता है. Experimental learning should be transformed to students also directly. घर के हर काम में एक्सपेरिमेंट. सर कभी कभी ये होता है कि बच्चे जो हैं जो कमजोर हैं उनके कारण क्लास में उसका परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती है. Sanskrit में you are chanting the mantras, Vedic mantras. So there is a ascent and descent of sound. यस सर. Proper sound and your chorus. You have Yes. chorus. Yes. So this is also practical approach. The chorus. डायरेक्टली हमारे घर में जो एलपीजी जलता है उसमें ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर रहता है. Yes, sir. कलरलेस होता है. ये भी है. तो बच्चे को हम घर में भी सिखा सकते हैं कौन सा कैसे. Suppose flame. Kind of the parts of flame. This is also practical approach. See Yes. the parts of flame. Yes. The red part, the hot part. Class 8. This Yes, is sir. class 8. Sir. There is also kind of Flame structure. observation. Everything is observation. This is a good topic to talk about. यस सर. शुद्ध ज्वाला जो होगी वो बिल्कुल नहीं आएगी. रेड कलर जो आई वो अशुद्ध होगी जिसके कारण हमको सर कारण ज्वाला इज फ्लेम. यस सर. और उन लोग से ज्वाला जब नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के कारण ज्वाला बिल्कुल रूप से नहीं जल पाती जिसके कारण सर कलर लाल ही रह जाता है. वो संपूर्ण ज्वाला नहीं होती. जब संपूर्ण ज्वाला कोई अच्छे ढंग से होती है तो उसका कलर ब्लू में आ जाता है. So what should we should do in math subject in practice for experimental learning. Math में सर कैसे करना चाहिए? Math start from numbers. Yes. Every mathematics start from count. Count. And we should take kind of evolution of mathematics. So mathematical approach since ancient time, people had the titles, Mavesis. And how they start counting is very interesting. They selected some piece of stones in place of titles and analogy. 1 for 1 is equal to 2 for 2. This is the counting process. और सर मैथ में सर जैसे कि और एक चैप्टर में रिलेशनशिप में किया सर उनको अगर डिराइव कर रहा है तो उनके लिए सर 3D पिक्चर होता है जो बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आता तो उसके लिए सर ये चीज बहुत जरूरी है सर. प्रैक्टिकली टीचिंग किया जाता है उसके सामने अगर पिक्चर को सामने दर्शा करके रख दिया जाए जैसे क्यूब का हो गया सर है ना कोन का हो गया ये सब चीज सामने तो बच्चे को इफेक्टिव होगी इन मैथ टीचिंग. Yes. And Sanskrit and Hindi sir. ऐसे तो डिसेंट भाषा संस्कृत और हिंदी भाषा का विज्ञान बोलिएगा भाषा. सब भाषा के ज्ञान को कैसे उसको प्रैक्टिकल लर्निंग उच्चारण में बोलकर या बच्चों को सिखाकर बोलकर. इसी को फोनेटिक्स कहा गया है. सब ज्ञान फोनेटिक्स का मतलब क्या भाषा की भाषा उसी को फोनेटिक्स कहा गया है. फोनेटिक्स उसी का नाम है. How to speak and how to cite, how to compose the music. This is all about the phonetics. कितना टाइम और बचा है सर? हो गया. Sir, on the recording right now. Okay.
what we are discussing, this is not the matter that I am saying continuously 1 hour. This is no way to speak continuously 1 hour. This is no way to speak continuously 1 hour. This is the part of learning. This is the part of training. We have to discuss this topic to each other also. देखिए अब हमारा तबियत खराब करके ठीक होगा एकदम फ्रेश हो रहा है मैंने अंदर से ये कर रहा था पास से बड़ा Yes. पानी बड़ा चाहिए That day, sir, you continuously spoke a long time, 1 hour. That is very handy. That is very handy procedure. but I did not find myself to be happy and doing something I did not find I was feeling so immense pleasure और सर श्रीवास्तव सर एक चीज और है सर उसको बोलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस जनरल लाइन में आता है उसको भी बोला जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ इसे रियलिटी कहते हैं उसको सोना का पानी चढ़ाना चांदी का पानी ऐसी कोई बात नहीं है। और बताइए सर श्रीवास्तव सर, आप बताइए बायोलॉजी में तो कैसे आप क्या मानते हैं, कैसे प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए, कुछ भी बताइए इसके बारे में। बायोलॉजी में प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है तो उसमें सबसे बड़ी बात है सेंस ऑर्गन का भी एक साथ हो, जैसे आपका देखते हैं एक बच्चा देखता है और दूसरा हाथ लेता है तो एक अलग चीज है और दूसरा देखता है और एक सेंस ऑर्गन ये जितने भी ऑर्गन हमारे सेंस ऑर्गन फाइट होते हैं तो उसका प्रयोग करके बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो बेटर उसमें सीखता है और जो क्लियर होता है वो कभी नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए लैब में ले जाकर उसको कोई चीज मान लीजिए बोन की बात है बोन की बात है इंटरनल का बोन को हाथ में लेकर मान लीजिए कि फीवर तो फीवर कैसा होता है फ्लोरोसिस बोन है उसका साइज कहाँ पाया जाता है। अब एक बार स्टूडेंट लेके हाथ में अगर उसको देख ले तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसके पहले समझ में आ स्टेज होगा प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है पिक्चर दिखाइए कुछ उसको रियलिटी में लैब में ले जाके जो ओरिजिनल रियलिटी है उसको जाके दिखाइए ये अप्रोच हम लैब में लाएंगे और बताएंगे कि इसका ब्लड करने के बाद ये वाइट क्यों रेड क्यों We should give weightage 60% or 40% to experimental learning. हाँ तो ज़्यादातर 60 40 or 40 60. suppose sir Yes. suppose I never tested the mango and I want to please provide me the taste of mango how I never tasted the mango even throughout life and I insisting you to please give the information of the taste of mango without eating. How can you give the what can you make it with the taste? Then you can just imagine it. Can you imagine the taste? I never eat mango. I never eat. In reality, कभी नहीं खाया हमने हमको आम का सबसे हमको अनुभव है मैंने आम अभी तक ना खाया अब हमको सबसे टेस्ट करवाइए no, it is not possible. so it is well said that one picture is better than 1,000 words. Yes. Until this एक बार स्टूडेंट अभी बता रहे हैं मुजफ्फरपुर की बात है बहुत सारे स्टूडेंट हर चीज पूरी सब रख ली है सब जानते हैं लेकिन आप पूछा जब फिट क्या होता है पैडिंग क्या होता है तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं मैं क्या जानूँ कि क्या होता है सारा चीज नहीं मालूम है। यहाँ तक कि एक टीचर मुजफ्फरपुर में एक जगह गए गाँव में देखे चारों तरफ गेहूँ की खेती लगी हुई थी अरे सर हमसे सर क्या ये धान आपको क्या लगता है अब एक टीचर एकदम नाम नहीं बताएंगे मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थी लेडी टीचर वो कह रहे हैं गेहूं को कि धान है क्या तो बोले आप क्या सुबह बोलने का कैसा होता है कोरोना में बताइए इसमें कौन सा क्यों हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिर आप देखिए आप ये क्या बोलते हैं अमरेश सर देखिए आपको बता देते हैं कि जब स्कूल में टीचर क्लास छुट्टी में है। है, जब तक कोई टीचर क्लास के अंदर है तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन जैसे केवल मैनेजमेंट के अलावा या प्रिंसिपल हो के नहीं आ सकते। सही बात अभी क्यों कर रहे हैं ट्रेनिंग का पार्ट है इसमें।
Practical approach का आप practical approach का बात है. You have not it's even if you are inside in a personal room, I will ask and then enter your room. जल्दी आप सीख लीजिए. सर कभी कभी क्या होता है कि टीचर कुछ गलत सर इतना ही नहीं, अगर मैं अपने कमरे में हूँ कोई इंसान अगर मैं कैसे गलत पूछे आ जाएगा उस पे भी मैं पूछूंगा. आप नहीं आना चाहिए. सर कभी कभी क्या होता है ना टीचर जब पढ़ाते हैं क्लास में एक ट्रेनिंग पर हम बोले थे फैमिलियर एनवायरनमेंट इन स्कूल. फैमिली एनवायरनमेंट कैसे है? ये पूरी नहीं होना चाहिए. If we persist our arrogance, our proud, we cannot create healthy environments. Sometimes something is suppressed in the intellectual teacher. And see who is standing before you and who is talking before you. So it is your parameter, it is your measurement. Since a skilled teacher, मतलब skill, life skill का बड़ा महत्व है. नहीं तो स्किल होना पड़ेगा. आप कुछ पढ़ लेंगे और स्किल रहेंगे. स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. माय ओपिनियन, माय बिलीफ फॉर लाइफ पर्सन. Sir, familiar requirement means that familiar requirement means all that what हम आपको हंसा और आप हंसे. क्या हंसना बुरा है? क्या आपको हम खुश कर देंगे? खुश होगे तो अपराध होगा. नहीं. तो हंसे हंसाए साथ चले साथ रहे. ये होगा अच्छा महाभारत. सबको साथ सबका विकास. गले से गले मिलकर चले. सबको हंसते हुए चले. नहीं ये इसमें प्रश्न अहंकार ही नहीं. नहीं ये अब अहंकार का खात्मा नहीं है. नहीं ये तो है लेकिन जो रूल्स होते हैं रूल्स नहीं बने हैं. हम लोग रूल्स हमारे आपके साथ रहा अपराध है. नहीं ये देखिए मैं ये आप नहीं समझिए. यहाँ पर कोई तरह नहीं बैठा और कोई आपको जिक्र नहीं करता. समझ रहे हैं? दृष्टिकोण. नहीं तो अगर दुनिया पूरी पे चले तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकता. आप खुद बनाए हुए बस बनाए. एक बात बनाएगा बस. तो इस बात को ध्यान रखिए. समझ लीजिए. बनता है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. अगर अभी हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं. भाईचारा है. यहाँ पर कोई अहंकार नहीं है. कृष्णा सब जैसे हम हैं वैसे हमारे है नहीं. तब हम ब्रह्मास्मि तक कौन हंसी. यही तो हंसी. हम ब्रह्मास्मि तक कौन हंसी. जो ब्रह्म में वही आप हैं. यू आर नॉट अनलॉसिंग फिजिकल बॉडी. वही तो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रह्म. वही ब्रह्म. इस बात को चले तो कितना अच्छा होगा. कहीं भी नहीं लगाएंगे. और वो तो है प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए. आप उसको स्वागत नहीं करेंगे. ऐसे डायरेक्ट नहीं ना काम नहीं. 22-21 मिनट से बाकी आवाज आप भी चॉकलेट बगैर पूछे आप भी ये करवाए तो वो अलग चीज है. बगैर आज बगैर पूछे कोई झुकाएगा. हाँ कोई झुकाएगा क्लास में आप पूछे. मेरे बिना स्किल झुकाएगा. जहाँ तक कोई ऐसा ही नहीं है. बिना स्किल के तो झुकाएगा क्लास. बोलो यहाँ सब लोग कैसे. ऐसा तो हुआ है डायरेक्टली नहीं बोलेंगे लेकिन हम तो रिटेलिएट कर देंगे कोई भी हमको उससे फर्क नहीं पड़ता. अब रुका क्या रुक सकता भी नहीं. सर कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो गलत मतलब कि गलत सवाल बता करके तब सही सवाल पे पहुंचते हैं. उससे सही आंसर पे जिस समय हम गलत बता रहे हैं बच्चे को कहीं कोई टीचर बाहर से देखने वाले अगर आकर वो देख लिए तो सोचेंगे गलत पढ़ा रहे हैं और ये सोच के चले जाएंगे. लेकिन हमने पहले गलत पढ़ा दिया तब बच्चे को सही बताया. पढ़ाने का तरीका यही है. तो इसके कारण ये सब कुछ बाहर नहीं कि कुछ इसमें टीचिंग हो रहा है उसमें आना एकदम मिलाओ नहीं. तो आउटसाइड से आप कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते. वही अच्छा चलिए बेटर हो गए. टाइम कम रहा था कि कब टाइम लगा. 20% हाँ सर गलती से के पास होते हैं बच्चों को ज्यादा सुनाई और आप
CBSE Inhouse training. CBSE Inhouse training. टोपी अगर अपने फ्यूचर कुछ उसमें दान भी हो जाए तो अच्छा टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग और टीचिंग कैसे टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? ये जो ट्रेन है उससे बता टीचर ने पढ़ा उससे बता टीचिंग सिखाना ट्रेनिंग में तो वही तो हो रहा है अभी जो बता रहे हैं हम बोलते हैं आगे को ट्रेनिंग हो रही है ये बोलते हैं आगे को टीचिंग ग्रेड को टीचिंग और आगे को ट्रेनिंग मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिफर करना है ट्रेनिंग और टीचिंग रिसोर्स और रिसोर्स क्या है जिसका मतलब है नॉलेज का इंफॉर्मेशन देना और ट्रेनिंग का मतलब है उस इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन देना। यहाँ एप्लीकेशन है ट्रेनिंग वो जानता है ऑलरेडी पहले से उसका यूज करता है स्किल डेवलप करना उस चीज का एप्लीकेशन तो हो रहा है तो टीचिंग हो रहा है अरे वही सबको हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन टीचिंग हो रहा है हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन इन डेली लाइफ। you have already knowledge मतलब आपके बारे में और सबके बारे में बोल रहे हैं हम सर किसी भी चीज को पर्सनली सब प्रोफेशनल 1.5 लाख से और सर से बताइए आप बताइए कुछ वही जो ट्रेनिंग हो रहा है तो जो भी थोड़ा बहुत सीखना है उसको रियल लाइफ में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें जैसे हमें सर ट्रेनिंग दिया है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम तो जो भी हमें सर पढ़ाया है 2-3 तो वो चीज हम लोग अपने क्लासरूम में करें पहले बात है ना तो जैसे पहले टीचर्स को स्माइल करना चाहिए थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहिए क्लास को तो वो चीज हम लोग यहाँ कर सकते हैं ठीक है वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मतलब सर बताया कि फ्यू रिस्पेक्ट्स में हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि आज का टॉपिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस कर इससे अच्छा होगा कि होता है इससे अच्छा होगा कि उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करें कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सिर्फ बताइए स्माइल नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होता है कैसा है स्माइल नेचुरल होना चाहिए आर्टिफिशियल नेचुरल हां इसमें स्माइल सर जैसे बच्चा को मार दो ठीक है तो जबरदस्ती हंसेगा मतलब कोई हंसो जबरदस्ती हंसेगा अरे वो है जो नींद दिखा के हंसा वो जब हमको रेशनल नंबर पढ़ाना होता है तो हम रेशनल नंबर को साबित करने के लिए उसको रेशनल मान कर सकते हैं। हां सपोज दैट √2 इज द रेशनल नंबर फिर उसको हम कंट्राडिक्शन करते हैं आप इसको मानते हैं क्या ये अलग चीज है स्माइल की बात सब अब याद आता है इसकी हां अब याद आता है बैठते हैं फिर याद आता है फिर इसको बताते हैं नहीं हमारा इसको नोटिस सर कंटीन्यूअस हम डिफरेंशिएट करें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में सबसे ज्यादा वैल्यू देना तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता कम है क्योंकि मतलब उस तरह का नहीं होता ना सीधे रिसोर्स लगाना है हम लोग करें कि दो वेरिएबल से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जब तक टोटल मैचिंग नहीं होगा कोई भी चीज रेजोनेंस कैसे होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस होगा जब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मिलेगा सेम फ्रीक्वेंसी का अनुनाद बढ़ जाता है तो जब तक रेजोनेंस नहीं होगा मेंटली रेजोनेंस ना होगा टीचर और स्टूडेंट में कैसे अच्छा क्लास होगा हम सब लोग टीचर रियलाइज कर रहे हैं रियलिटी क्या है ग्राउंड पर किस जगह पर है कहां माहौल में है उसका परवरिश कहां हुआ है उसके आसपास क्या सीख रहा है बच्चा क्या समझ रहा है ये आइडियल बात नहीं है प्रैक्टिकल बात तो बच्चा कहां से आई करता है नहीं पढ़ेंगे
बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, वो पर्टिकुलर्स नहीं करता है। प्री स्कूल टीचिंग में तो पता ही है, उसे तो पता है प्री स्कूल टीचिंग में उसका इन्वायरमेंट बैकग्राउंड कहाँ से है, घर में गाड़ी से लाया हमारा लाया पति पत्नी के लिए बर्तन पड़ा है, तो क्या ऐसा कैसे ना सब प्रोसेस में तो है क्या हो है बर्तन, हां बर्तन टूट रहा है, माने धमाका हो रहा है, उस इन्वायरमेंट में क्या है कैसे करेगा स्टेप्स क्या हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के? वही तो पता है कि पहला स्टेप में कोई चीज का लर्निंग का मल्टी सेंसुअल अप्रोच है। अच्छा हर चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते चलो हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते स्टूडेंट मुझे फिजिक्स में रहता है ना क्वेश्चन बुलेट इज फायर्ड एंड 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर सेकंड ऐसा थोड़ी ना बुलेट फायर करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे मॉडल तो बना सकते हैं ना हम मॉडल होता है मॉडल मैथमेटिकल मॉडल नहीं लेकिन एक्सपेरिमेंट में बुलेट हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन सिखा रहे हैं तो ऐसा तो ना कि लोग किसी और फिल्म दिखाते एनडीए करना ये पेन चला, ये पेन की गति हो गई, इसको किलोमीटर पर आवर नहीं बदल देंगे, इसके बीच की दूरी एक है तो 18/5 विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करवाते एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का उद्देश्य यह है कि याद न करना पड़े स्टूडेंट देख कर तो उसको पता चलेगा, उसको परमानेंट दिमाग में रहेगा। अगर हम जरूरी कर रहा है तो पेपर पर जल्दी समझ में आएगा, केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंडरस्टैंडिंग लेवल कोई भी टीचिंग होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल से, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई, हां उसका लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो, इसलिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है पहले बिफोर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही था, थ्योरेटिकल लर्निंग पहले नहीं था। पहले पहले क्या था, ऐसा तो डिटेल कुछ था नहीं, जैसे पाठशाला होते थे तो उसमें बच्चे को बताया जाता था, पहले ओरल बताया जाता था, देखो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करना, फिर उसे करवाया जाता था तब सीखा। अभी आप संस्कृत लिख के बोल के पढ़ाते हैं बच्चे को, पहले तो कंटिन्यू बोल के ही बताया जाता था, श्रुति पर पढ़ाते हैं, वही था पहले गुरुकुल का शिक्षा हुआ करता था, श्रुति बोल और के ही सिखाया जाता था। श्रुति पर पढ़ाते हैं, लेकिन उस परंपरा में भी लाइफ स्किल अलग नहीं था। हां लाइफ लाइफ स्किल वहां था, सवारी खेती बाड़ी करना, सब सारे बेटा को बाहर जाना पड़े तो कैसे समझाना पड़ेगा, जिसके बाद राम को ट्रेनिंग दिया, राम को भी तो मम्मी 14 साल की ट्रेनिंग था तब वो 14 साल का है तो लाइफ नहीं रहता तो है लाइफ स्किल का ट्रेनिंग था, रियलिस्टिक ट्रेनिंग ये रहता है कि समय 14 साल घर बनाना पड़ता था और भिक्षा में मांगा इसलिए उसका एजुकेशन मांग कर खा सकता, अहंकार नहीं है उसका, भिक्षा इसमें मांगा जाता है, जन्म होता है तो वो भी मांगते सब प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलपमेंट हो सकती है। जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, जो भी एक्टिविटीज लाइफ में करते हैं, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। वो सारा प्रैक्टिस से आप जो सीखते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। देखिए लर्निंग में पहले जो व्यवस्था थी मैं कहानी बताता हूँ, आर्मी और श्वेत केतु दोनों पिता सुनिए सर, आर्मी और श्वेत केतु के पिता का नाम आर्मी और आर्मी जिस गुरुकुल आश्रम में पढ़े थे, श्वेत केतु उसी गुरुकुल आश्रम में पढ़े। श्वेत केतु 24 वर्षों में ही वेदों का अध्ययन कर लिया, सभी वेदों का अर्थ के साथ अध्ययन किया और गुरुदेव घर भेज दिए, घर आने के बाद आर्मी राजा थे, उनका बेटा श्वेत केतु था, लेकिन सीखने के बाद उसमें एक गलत धारणा आ गई, हो गया उदंड स्वभाव का हो गया, इतना विद्वान थे श्वेत केतु जिस गुरुकुल आश्रम में तू पढ़ा है उसी गुरुकुल आश्रम में हम पढ़े, लेकिन तुमने कौन सा इतना किसे प्राप्त कर लिया, तुम्हारा स्वभाव इस तरह का हो गया। सुना कैसा है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे बोला श्वेत केतु को इधर आ सकते, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो और करो। जाओ एक बरगद का जो वृक्ष है उसका फल ले आओ, लिया कहा इस बरगद के वृक्ष के फल को तोड़ो। श्वेत केतु भी वही किया, उस बरगद के वृक्ष का छोटा सा फल था उसको तोड़ दिया।
फिर श्वेत केतु को आदमी कहते हैं जो अब देखो इसमें क्या है, तो श्वेत केतु का ऐसा छोटा छोटा बीज है। फिर आदमी कहे कि उसमें एक बीज को तुम निकालो, श्वेत केतु निकालो। फिर आदमी कहते हैं उस बीज को फिर से तोड़ो, श्वेत केतु फिर तोड़ो। अब आदमी कहे जो अब इसमें क्या है बताओ, श्वेत केतु कहता है कुछ नहीं। तब आदमी समझाया यही तुम्हारा सोच है, यह जो छोटा सा बीज है ना, इसमें बहुत बड़े वृक्ष की शक्ति छिपी हुई है जो समझ नहीं रहा है। और वही यह आत्मा है, स एव आत्मासि तत्त्वमसि। जिस तरह इस छोटे से बीज में बहुत बड़े वृक्ष की शक्ति छिपी हुई है, वैसी यह आत्मा है। और जैसा तुम है वैसा ही दूसरा जीव है। तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव से नहीं बदलेगा। तुम अपने आप को ठीक करो, यदि वैसा कोई तुम्हारे साथ व्यवहार करता है तुम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे। जो तुम्हारे ऊपर बीते स्वयं दूसरे के ऊपर बीतेगी। तो श्वेत केतु का स्वभाव परिवर्तित हो गया। और एक ट्रेनिंग का और बात है, कहीं से बाज का बच्चा सुनने का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक मुर्गी के बच्चे के साथ बैठ गया बचपन से। बात से बच्चा बैठा बाज का बच्चा जो सबसे ट्राई नहीं होता है, सबसे ज्यादा क्यों होता है, मुर्गी के साथ भी रहने लगा। एक बूढ़ा बाज बैठ कर देख रहा। देखिए केवल बात का प्रभाव, आत्मदर्शन का प्रभाव। कहा कि तुम क्या होता है, हम मुर्गी हैं। बाज का बच्चा हम मुर्गी हैं। तुम रहते हो, हम लोग रहते हैं, हम रहने वाले हैं। देखो बच्चे हैं, तुम मुर्गी को रहना है, तुम हमारी तरह बगल उतनी ऊंचाई पर उठ सकते हो। इस बात से उसने बताया नहीं, उसको बोझ कराया कि तुम बाज हो, मुर्गी नहीं हो। और वह साक्षात्कार किया जब अपना प्रतिबिंब देखा तो बादल में बोलता है। तो यही ट्रेनिंग है कि आपको साक्षात्कार करना है। क्या बूढ़ा बात उसको ये कर रहा है। हाँ देख लेंगे तुम क्या वही दर्शन करवाना है। यही सब का प्रभाव है कि बात को टूट लगा रहा था, मुर्गी की तरह इसको पता ही नहीं था, जैसे हमारे में इतने सीख सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते। सही बात। असीम क्षमता है, असीम अनंत क्षमता है। हम उसको नहीं देख पाते, मुर्गी की तरह रह रहे हैं भय से घिरे हुए। दिस इज रियलिटी। जीवन में चाहे आहार निद्रा भय हर चीज का आहार निद्रा भय सही बात है। इसको कंट्रोल अगर आदमी नहीं करेगा, इसको कंट्रोल आदमी का हो जाए। मनुष्य का माइंड के स्ट्रगल में चल रहा है, वह मटेरियल चीज में फंस गया है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पा रहा। We all are trapped. In the Maya illusion that is not real. Even in science, Yes, we all are trapped inside. every scientific theory is subject to error. After 100 years, 200 years, modern scientific assumptions and hypotheses get changed drastically. Sometimes, Automatically. yeah, Copernicus gave the theory geocentric model of the solar system. Then Nicholas Copernicus came, and then elliptical heliocentric models. Even in chemistry, John Dalton gave the model that atoms are indivisible and cannot be cut, and gave 5 postulates. All the atoms of the material are identical. His postulate was 30 years. And it continued more than 50 years. Continued. Then after that one came and broke the atoms and find the large nucleus space between two atoms and found that no two atoms are identical, having the same element at different atoms, isotopes and isotopes. So reality great change. Science is dynamic. Then came models. Suppose Rutherford gave the model of the circular, how electrons revolve around the nucleus. The circular orbit, it tells say every electrons or charged particle when circulate in a circular orbit, then accelerates electromagnetic waves and ultimately its energy goes down and eventually it will fall in the nucleus and the additional of atoms will be annihilated.
remains constant. The model change in under Schrodinger. Who get the wave model of electron, not particles. So duality occurs. So every model changes with the time goes on. Time will be model changes. Ajit sir, your time is now completed. 5 minutes more. एक सेकंड भारी पड़ना एक्चुअली हम लोग 6 बजे से लगातार पढ़ाते हैं। हम लोग का ये नहीं रहता कि ये इसमें तो करना ही है। मैंने सोचा कि बोलना है 10-15 मिनट बोल देंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन हम प्रिपेयर इसी के लिए थे। इसके लिए भी जैसे इसके लिए नहीं कह रहा था कि फ्यूचर में अभी बोलेंगे पहले में पढ़ाते पढ़ाते क्या आपको हैबिचुअल हो जाते हैं इस टाइप से, हैबिट्स ही हो जाता है। तो इसके टॉपिक पकड़िए ना से पढ़ाते हैं पैटर्न करा दो वही पर कुछ भी क्या पढ़ाते जो टॉपिक होगा वही ना समझ कुछ भी मुझे एक टॉपिक आया बताइए ना। बता तो दिया मीटिंग इन हाउस मीटिंग ट्रेनिंग मींस नॉट दैट यू आर स्टडीइंग you have to discuss with your colleagues also. This is also a part of meeting training. Yes sir. रीजन नहीं होता रीजन Fusion. It's other matter than type resource person. ना डिटेक्शन में कितने क्या आपने कुछ बोल रहा है? ये आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। समान सब सुनते हैं वही चीज है आप बात में साथ में ये होता है कितना बस क्लियर है यार मुझे यहाँ ये साथ में सब है या वो अलग है। पूछिए नाम से पूछिए क्या अपने देश में 30% बिजली न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाया जाता है। केमिस्ट्री सर कहाँ से किस देश से शुरुआत हुआ है? केमिस्ट्री सब का केमिस्ट्री एक केमियो और ग्रीस के लिए है ब्लैक सॉइल और वहीं से केमिकल का शुरुआत हुआ था। केमिस्ट्री और वहीं से अपने यहाँ का कोई भी चीज रियली आती है। हमारे यहाँ जो लोग बच्चे भी होते हैं वो हमारे अपने चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो बाहरी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इसका प्रमाण है कि हम रसायन शास्त्र में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग का अपना कुछ कहाँ है, हम लोग हर चीज दूसरे पे आएगा। शुरू में भी अंग्रेज भी आए हमारे यहाँ, इसी की वजह से वो हमारे हमारे यहाँ पर क्या मैं रोकना चाहूँगा यहाँ ये ईश्वरी है जो मेरे पास संपदा है उसको हम लोग लायक नहीं करते। नहीं जैसे धोती पहनने को नहीं जैसे गंगा स्नान करने का जो महत्व है, जो गंगा के तट पर रहते हैं वो तो पर डे स्नान करते हैं, उनके लिए गंगा स्नान का क्या उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो गंगा से दूर है वो स्नान करने के लिए जाते हैं, उनका अलग इम्पोर्टेंस है। मेरे वैशाली में फौरन कॉलोनी बन गई है, लोग आते हैं इसलिए वैशाली से। दुनिया का पहला लोग हाँ वैशाली से मिला हमारे लिए तो घर का पिछवाड़ा है। इसी में हमारे बगल पड़ोसी चाइना में क्या होता है, वहाँ हर चीज आप चाइना में जाइएगा ना, आपको चाइनीज सीखना है, वो इंग्लिश नहीं है। यस सर उसके आपको अनुसार दुनिया में ये चाइनीज सीखिए तब उससे बात कीजिए। हमको उनके अनुसार ढलना अच्छा सुनिए, ऐसा बात नहीं है साहब। मातृभाषा में नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी दूसरी भाषा पढ़ाई गई। भाषा सीखने से बायस नहीं है। भाषा को मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में सभी जैसे पढ़ाई सभी भाषा जी है कि नहीं? भाषा हमें दुनिया से जोड़ता है। जोड़ता है। भाषा को आनी चाहिए। भाषा आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि तुम अपनी माँ को ही पीटे और जो महिला है तो उसको सम्मान दे। बिल्कुल तो ऐसी बात नहीं है। भाषा है तो भाषा है। हाँ। प्रधान तो हमारी अपनी ही बात भाषा से